Hello, friends. A very warm welcome. And in this series, we again will be taking up a set of 5 questions, and these questions will be reflecting the kind of level that we have achieved. It's very important to go through in a sequential manner, and in order to understand the gradual but consistent changes in the answers, one must go through all the series which we had done till now. Starting with question number one, with suitable example, discuss how environmental pressure groups enhance public participation and responsiveness with regard to environmental policies in India. So, question is not speaking about environmental policies; it's talking about only the role of environmental pressure groups, how they are enhancing public participation and responsiveness. So let's see how it is starting, because to protect and to conserve environment, it is a duty both citizen and state under Article 57A, Article 48A DPSP. The link between citizen and state is via pressure group. One of the links. It's not the link, it is one of the links, and which enhance citizen participation and responsiveness by raising and highlighting issues which have been not given thought on. Ladakh protest in 2023 for sixth schedule protecting pristine nature. I think it's a very good example. But before this, we could have written a para or two that how the environmental pressure group consists of those stakeholders, those who are having expertise, those who are having passion, those who have spent their lifetime in the care and also in the protection of nature. Advocacy and strengthening response. So already response word is already there. We should avoid the same word. Education and response from the citizen to make government more accountable to our environment. Recent yellow mark on tree campaign in Guwahati to protect against illegal felling of trees in the fire. So again, this is a very good example, and I think good effort is also visible here. But the language could have been a little different. It have been a little smooth. How have experience and expertise over various issues concerning environment, IPCC assessment report on climate change. So again, it's a very good example of pressure group, but over here one must bring the role of like media is also one of the there are environmental specific magazine, environmental specific newspaper, or maybe there are social media channels also, they must also be brought here. Reviewing and recommending the environment policies for effectivity, like EIA public consultation platform in Dibang protest in Arunachal Pradesh. That's a good example. Public sensitization program and use of PL justice for court order, for example, Dodo Conservation NGO through Supreme Court judgment on. So I think wonderful examples, very good examples. One example over here, I think should have been brought with respect to environmental pressure. For example, if there is, for example, if there is a proposed highway through a wildlife sanctuary or through national park or through forest reserves, over there a very important role is played by environmental groups to tweak the desired thing. So to make the pressure group more effective, following need to be done: school children sensitization on the role of NGO. So it should be part of the curriculum first of all. Pressure group must be integrated. Their ideas must be integrated with social festivals. वन महोत्सव है, इन्वायरमेंटल डे है, अर्थ डे है, वो सारा चीज हो सकता है, और हो ही रहा है, तो नया कुछ नहीं बताना है, जो ऑलरेडी है उसी में आप करिए. So I think far better effort, far more confident answer, and far more ideas, but then little bit more could have been done. For example, community radio एक शो हो सकता है इन्वायरमेंट का. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट डाउन टू अर्थ अपने आप में प्रेशर ग्रुप की तरह ही है वो. उसकी पूछ है, उसकी सूझबूझ को माना जाता है. तो दिस शुड हैव बीन ब्रॉट, सो दैट इज मिसिंग. But rest, it is above average on track. The recent acknowledgement of sex worker as profession by Supreme Court is merely the first step in ensuring basic rights and equality for workers in India. Exactly. Yes, true. First of all, females' dignity, then the life itself is very important. Article 142, attain complete justice. Supreme Court have recognized sex worker as profession having right to dignity under Article 21. So we are debating the fact that whether it is legal or illegal in India, but then if they are already forced into it, then it is saying that it is a profession. That's how it is. Judgment does not result in achieving justice at a grassroots level. At the grassroots level, harassment persists from law enforcement. It is not just law enforcement. Societal taboo, societal exclusion. अपने ही नहीं मानते, अपनों की नजरों में ही सब खत्म हो जाता है, वहां से शुरू होता है. डर,
अछूत जिसे हम कहेंगे कि एक तरीके से अनटचेबिलिटी जो मेंटल प्रैक्टिस की जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So it's a complex issue: discrimination, marginalization, security, complexity, or recognized crime needed. Case of missing girls in northern 24 Parganas, sensitization of society. So good points. Again, little bit of more connectivity is required. However, judgment is the first step towards justice. Other concrete steps being taken to achieve the desired rights and equality: rehabilitation, reformation, scaling, training, penalization for organized crime, very true, safety, reproductive rights, and public sensitization program. Two elements which are missing here: first of all, the families who are dependent upon these workers, उनका क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा, और क्या उन्हें स्कूल के लिए, क्या उन्हें जीवन के लिए आधार मिल रहा है. सेकेंडली, what efforts are being made to prevent sexually transmitted disease. दोनों चीजें यहाँ मिसिंग है, उससे आंसर का एक क्रूशियल एलिमेंट मिस हो गया. Discuss the role played by DLSA in providing legal aid and disseminating illegal awareness in India. Very broad question, very important question. Free legal aid included Article 39A, 42nd Amendment Act. NALSA, established 1987, statutory body, SLSA, state district. Fine. This was to ensure that justice reached the last mile in a timely manner. I agree. The role of DLSA is to provide accessible and affordable free legal aid to vulnerable section of society, SC, ST, women, PWD, identification and inclusion of people in criminal justice ecosystem. This is also true. Acts as authority which makes the government accountable in the due process. Agreed, but one must bring examples of which state Rajasthan क्या कर रहा है, हरियाणा क्या कर रहा है, बिहार क्या कर रहा है. That without bringing that, you cannot be exclusive. Following directions of SLSA and also is under the coverage of legal aid in all circumstances of NHRC. It have grassroots level picture of justice implementation on ground via community engagement, via radio, samitis, offers alternate dispute mechanism, family court, gram न्यायालय. So little bit more practicality could have been there if कैसे किसी स्टेट का हुलिया थोड़ा बदला है, चाहे वो हरियाणा का एग्जांपल लो, केरला का एग्जांपल लो, लिटरेसी का कोई रोल है कि नहीं है, एंड द काइंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी स्टेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड everything makes up because it is under the high court and then ultimately under supreme court. So what are the best model, any model state, any model for this, or any special practice? So capacity building, free legal aid, then on the top of it you must be speaking about infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एडिक्वेट स्टाफ होना चाहिए. वो नहीं होगा तो काम कैसे होगा. The collegium system has become a victim of its own success with the continuation of power in hands of few, leading to question about its legitimacy. Comment. So first of all, it is a comment. So comment can start with the idea that it is always easy to question a well-established system, but its transparency and its effectiveness must be seen. So collegium system is one of the most effective systems. It is one of the most sustainable systems till now. So how it was formed? First judge's case, second judge's case, and the third judge's case. 1992, CGI plus 2, CGI plus 4. Slowly, the appointment and transfer were decided by collegium, evolved via self-interpretation of Supreme Court. But the self-interpretation also involves the doctrine of transparency in a way. What had been the credentials of the judge? What had been the conduct of the judge? What is the report of different, Department of Justice is there, then security agencies are there, and so forth. So that is why it is not their own whims and fancies. There is a whole process behind it, and they deliberate on it effectively. Reaffirm the faith, non-interference by executive. Supreme Court is the final interpreter of the Constitution. So protect the Constitution from arbitrariness, as seen in the appointment of CGI, superseding another senior most CGI in the emergency period. I agree with that. Expertise and specialization over judge lies with judicial consensus. Judiciary themselves has been criticized. So the question is asking for comment basically. So you cannot criticize it like this way, but then still opaque in working. No, it is not opaque, as I just said. You must, it is alleged by some. It is not opaque, it is alleged. Allegation of nepotism and marginalization of vulnerable sections. For that, women and SC/ST, they are coming up by seniority, by their presence. So more should be required, more effort should be required. You cannot always supersede the seniority for backward sections or even for women. Judiciary itself has to committee themselves towards and limit it to constitution. They are working on it, so it has to be based on certain noble thoughts, certain constitutional principles.
Non-compromising in NJAC Order 2019. So that is the prerogative of the Supreme Court. So we can't say that. Thus, it lies on the judiciary themselves to evolve from the collegium system. Collegium system must be there. The ultimate interpreter is the constitution. Ultimate interpreter of the constitution is judiciary, and ultimate judgment is by the masses. So masses have huge faith. Masses have never been criticizing. Masses look forward to the judiciary. It should be more faster. Handing of cases must be done more faster, and impeccable integrity must be there even at the lower level. That is the solution rather than doing something which had been in the UK or US but not in India. Civil service reform must go beyond recruitment and standardized training to cope with the present day challenges. So it can go beyond if recruitment and standardized training is continued, but the people with good intention, passion, merit must be there. That is the whole point, rather than changing the system. So Article 310, 311 mandate free, open, responsive, and accountable service. So criticized for being red tapeism, status quoist, bureaucratic mindset, too much social media presence. That's a small thing. But more than that, it must be people centric. It must be people centric. Corruption. So all these ideas are there, but then it is a kind of a mixed response by the masses. So the reforms towards future, they must bring into picture more updated structure. So like here it is written, over the years reforms under Santhana committee or Huta committee and second ARC have been recommended following must go beyond. So role of civil service should be role based from rule based service under Karm UT. So it is agreed we are moving towards it. Specialization of service with multidimensional and field knowledge required. So it is also happening. Economics is being focused upon. Public administration is being focused upon. So you can just say the best practices with the least, with the least least wastage of resources. Sensitization of service towards vulnerable sections. So it is being sensitization, and then on the top of it, there must be the rewarding of those people, those those service civil servants who are actually putting everything on stake. So political culture must. The nexus of politics and bureaucracy must be broken if somewhere it is emerging. Must be done rather than that. So transparency work not must be it must be seen. Perception की बात है. जैसे BDO dashboard, these will be added further. So rather than just saying कि red tapeism, it is not red tapeism alone by bureaucracy. It is always in the nexus with the businessmen and also with the politicians. So nexus break करना है. वो कैसे break होगा? More accountability, more citizen centric, more digitization. RTI tool है. लोगों को अपने लोगों को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए. ये एक लाइन आनी चाहिए. अगर अधिकारों का पता है तो आप नहीं कर पाओगे. So if we see the another set, suitable example, discuss how environmental pressure groups enhance public participation. So pressure groups act as bridge between government and citizens, balancer, policy formulation, environmental impacts. They play a critical role. So in the beginning only there could have been name of certain group, there could have been name of certain personality, one name, फेमस एनवायरमेंटलिस्ट जिनके शब्दों को हम आज भी मानते हैं, चाहे फिर वो सुंदरलाल बहुगुणा से शुरू करो, चंद्रिका प्रसाद भट्ट से शुरू करो, चाहे फिर वो कोई राइटर है जो इन्वायरमेंट के बारे में लिखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया, या कुछ भी आप कर सकते हैं. ऐसा आना चाहिए. अवेयरनेस अमंग सिटीजन शेयरिंग द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन डाइवर्सिटी. अर्रे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मूवमेंट इन मुंबई, इट आई एग्री इट्स अ गुड एग्जांपल, बट शेयरिंग द पॉसिबल, शेयरिंग नहीं है उनका मतलब, एक म्यूचुअल शेयरिंग है. बेसिकली पीपल मस्ट आल्सो लुक फॉरवर्ड टू इट. अ पोल्यूशन है दिल्ली का, इफ दिल्ली पीपल आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज, नोबडी कैन डू एनीथिंग. सो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप आप यहाँ से सोचिए, वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गंगा बचाओ यमुना बचाओ अभियान है, या फिर कोई एयर के लिए कोई पोल्यूशन ग्रुप है, स्कूल बच्चों का है, या सोसाइटी में किसी का है. सबको नौकरी की जल्दी है, सबको किसी को किसी की जल्दी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहीं से गड़बड़ हो जाती है. अवेयरनेस कैसे जनरेट की जाए, दैट मस्ट बी कमिंग इन टू आंसर.
Sensitization towards needs for sustainable development, for example, expert in environmental participation like Medha Patkar in नर्मदा बचाओ आंदोलन. So example is not correct, but then ठीक है, बेसिक पॉइंट है. एक नर्मदा बचाओ आंदोलन बन गया नर्मदा तो अब, और मेधा पाटकर को मतलब फंडिंग और उन सब बातों की हमने बातों को टेक ऑलवेज एग्जांपल्स विच आर मच मोर पॉजिटिव, विच आर मच मोर ब्रॉड. Lobbying for policy changes like Greenpeace India and Center for Science and Environment has lobbied for stricter pollution control. This is a good example. This is a very good example. I think it takes the answer to a next level. Engaging in legal advocacy through PILs, very true. Raise voice for right for rehabilitation of tribals, Odisha tribes. This is a very good example. Pressure group. This is a good diagram also. Pressure group, community, government. Trinity, strengthening sustainable development, bottom up approach. Active environmental pressure groups are great enablers. I think second part of the answer is really dynamic and it is showcasing the way, but then still environmental pressure groups. So think of your own. If you are a director, if you are a part of environmental pressure group, how you gonna do it? So they increase the citizens' responsiveness by creating social media posts, by creating poll, opinion poll, by doing a painting exhibition, by by bringing to light those issues which cannot come up say by marathon और say दिवाली होली. ये सब लिखना चाहिए था ना, कहाँ लिखा, कुछ भी नहीं आया ऐसा. Okay, sex worker, right of due profession, article 19 the constitution, fundamental right, recognizing workers, progressive step. But then again, it is not a profession which will be glorified, because they are, maximum people are forced into it, destitute, nobody wants to go into it. Safety, protection, acceptance, exploitation, informal. Words could have been a little better, but then still keywords are okay. वर्ड और भारी हो सकते हैं. सब बहुत रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ वाली बात जैसे मैंने कही थी, कोई और आप लेके आओ, हेल्थ एंड फैमिली, मतलब बड़ा बड़ा वर्ड आना चाहिए. Data collection, number of sex also move towards formalization. Formalization क्या? As I just said, if a scheme is also there, the scheme must be making them skill, making them part of the mainstream society. वो अपने आप में process है. Integration करने में एक generation लग जाएगी. So role of the district administration, providing them with the necessary ration and also other facilities. Awareness generation, ये बिल्कुल ठीक कहा. It's a very good point. Social behavioral change, ठीक बात है. Uh, then point number 3 is again, we can put it in a more different way. Exploitation by law, exploitation by police and other, what I should say, other departments हो सकता है. So that approach, or you could have written here the callous and insensitive approach. That could have been better. Decolonize and discrimination, inclusive policies, scheme like social security. सेक्स वर्क इज नॉट रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. सेक्स वर्क इसका रूट कॉज हो सकता है मोस्टली, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी डन बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ऐसा लिख सकते हैं आप, दैट मैक्सिमम गर्ल एंड वुमेन आर फोर्स्ड इनटू ह्यूमन ट्रैफिकिंग. दे आर नॉट विलिंगली डूइंग इट. इट इज नॉट अ चॉइस. एंड आप ये कह रहे हैं कि इट शुड ट्रांसफॉर्म इनटू चॉइस बेस्ड. क्या आप वाकई आपको लगता है कि इंडिया में जो है सेक्स एज ए प्रोफेशन को चॉइस बेस्ड मान लिया जाएगा? मतलब सड़कों पे जैसे दही बल्ले और टिक्की बिक रही है, ऐसे वुमेन घूम रही हैं और कोई भी गाड़ी रोक के बोल रहा है और वो पर्ची दे रहा है और उसके साथ बैठ के चले जाओ, ऐसा करके क्या हो जाएगा क्या? कैसे हो सकता है ऐसा? आपने कैसे लिख दिया ये? सोशल एक्सेप्टेंस फॉर सेक्स बेस्ड, नेवर, इट विल नेवर हैपन इन इंडिया. इट इज नॉट नीदरलैंड्स, नॉट इवन यूके और अमेरिका. हेयर वुमेन वुमेन को बॉडी और सोल दोनों से हमने देवी माना है. कैसे हो जाएगा ये? ब्लंडर हो गया ये बहुत बड़ा. So Supreme Court must have gone into, because I have not read that judgment, it must have gone into the whole issue by it would have been no other way कि भाई अब क्या करें, जो फंसे हुए हैं, जो कर रहे हैं, कम से कम उसको काम तो मानो. In that sense it would have legitimized it rather than saying कि हाँ हाँ ये भी एक काम है और इसका भी एक करिकुलम बनना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता. Impossible. I don't believe that for India. Am I right? Then very wrong trajectory. Discuss the role played by district legal service authority, as we have already seen that role played by DSA crucial. Legal aid services vulnerable backward section. कैसे करोगे अवेयरनेस? ये है ना बात. तो कैंप्स होने चाहिए, पोस्टर्स होने चाहिए,
स्लम्स और लॉयर्स जो हैं, बार काउंसिल का रोल होना चाहिए। बार काउंसिल को भी मंथली, 2 मंथ में एक बार। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैंने बात की, so that point must be coming up, otherwise these points are okay. Collaboration with NGOs for awareness, so go to the next level, go to the next level. So I think it's good effort and above average answer. The collegium system has become victim. Collegium system emerged from the three judges, ठीक है आपने ही बता दिया। फोर सीनियर मोस्ट, ठीक है बता दिया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, victim of its own success, delay in appointment by government judges appointing themselves, is it fair? So these are the allegations, these are the points, this is not a reality, this is not how it is, as we already discussed beforehand. So several questions are raised. Gender parity, so again less women are there, less women advocates are there, less women judges are there, then less women in Supreme Court. How you can breach all the seniority and still bring women? You have to write here that example, only 3 women judges in 2024 out of 34 Supreme Court judges, but how many women are there in total in the practice, and what is their seniority level? The question arises, if women are there and they are bypassed, then you can claim it. So encouragement must be done at the grassroots level to be that more women should take up this profession, and they must be consistently proving their merit, and that's how they will rise. So it's half baked answer. CGI is the master of roster. It is nothing wrong about it. Transfer of judges as a punishment posting. So reason is not disclosed. It is trust based. It is a systematic approach. Integrity must be there, as I just said. So at the district level, there must be more confidence, and system will not punish the right judges. So the idea, the societal nature and the societal behavior कि मैं क्यों पंगा लूं, मेरे को उसके बदले कॉस्ट देनी पड़ेगी, and that is why nobody wants to take up the proactive decisions that you should be bringing over here. So collegium system itself is not, I'm saying without bias, but then to completely put the questions on net, it has worked very smartly and also worked very sustainably, whether it is the appointment of High Court judges or whether it's Supreme Court judges. So the answer requires a complete reframework. Civil servants are the ivory framework of India, forming the backbone of administration and governance system, more so in the 21st century, when we want to have by 2070 Viksit Bharat. वो सब कहीं आया ही नहीं। Recruitment, lateral entry, training, foundational on the ground. ये reforms going beyond it deal with the present day challenge. Role of technology, digital training and technical know-how, AI हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. More streamlining is required, in that sense you can say. Imbibing data analysis ये भी है, बल्कि आपको कहना चाहिए था more people centric approach going into the field even at the senior level. स्वच्छ सर्वेक्षण, पब्लिक फीडबैक, ये सारा ठीक पॉइंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, वो भी है, ये सब है, लेकिन इसको और स्पेसिफिक और पीपल ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए? तो जो एक, अगेन द ब्यूरोक्रेसी वर्सेस बिजनेसमैन वर्सेस पॉलिटिकल जो नेक्सस है, उसको ब्रेक किया जाए, उसको डिसमेंटल पब्लिक करेगी। when public are aware of their rights, it will automatically happen. When public will put pressure for their desires and work, and they are not fearful of bureaucracy, in fact they look forward to bureaucracy, then all these things will happen. So I think on track answers, but that still an approach is required. अब देखिए कैसे लिखा गया। In Dehradun quarrying case, Vellore community welfare case, judiciary has highlighted the right to environment, inevitable fundamental right. तो हमने भी लिखा, लेकिन हमने एग्जाम्पल नहीं दिया शुरू में, हमने जेनरिक तरीके से स्टार्ट की। इनहेंस कैसे करते हैं, आइए ऊपर। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो हमने हमने भी बोला कि भाई आप यमुना बचाओ या किसी का एग्जाम्पल दो, तो एक एग्जाम्पल ये हुआ। जैसे बैनिंग ऑफ डिक्लोफेनिक सोडियम फॉर वल्चर्स, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पब्लिक पार्टिसिपेशन का। दूसरा हमने दिया धरती बचाओ संगठन, मेधा पाटकर का यहाँ पे एग्जाम्पल आया, फॉर ट्राइबल एंड इकोलॉजिकल राइट्स, तो ठीक है, उसका एक स्टेप आगे गए। वाटर कंजर्वेशन, जल स्वावलंबन, राजेंद्र सिंह जी, पानी पंचायत है, जो महाराष्ट्र में भी हमने सिविल सोसाइटी के तौर पे देखा है। वेटलैंड कंजर्वेशन, तो उन्होंने इन्वायरमेंट के अंदर ही तोड़ दिया। इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप लाइक वेटलैंड, आपको भी पता है ये सब। और फिर पॉपुलर एजुकेशन ने बता दिया आपका चिल्का बचाओ, या बांकी बिहारी चौधरी ने चिल्का बचाओ की। अप्पिको मूवमेंट कर्नाटका में नहीं थी, अप्पिको मूवमेंट इज इन केरला, प्लीज क्रॉस चेक। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलिफेंट फैमिली, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, उन्होंने भी अवेयरनेस पैदा की। चिपको आंदोलन और आर्य फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इन मुंबई हैव आल्सो इमर्ज इन इकोलॉजी। तो कितना सारे एग्जांपल्स आ गए। तो जनरल नहीं समझाया, इलस्ट्रेशन के साथ आ गया, हैंड्स ऑन अप्रोच, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड। और आर्टिकल भी लास्ट में डाल दिया। बात करते हैं कोलिजियम की।
नहीं, हाँ, सेक्स वर्कर्स की तो सुप्रीम कोर्ट प्रोग्रेसिव एडजुडिकेशन, सेक्स वर्क इज ए प्रोफेशन एंड पुलिस कैन नॉट इंटरफेयर इन कंसेंसुअल अरेंजमेंट्स, कंसेंसस, एंड कैन नॉट बुक अंडर क्रिमिनल चार्जेस। फर्स्ट स्टेप, हैरेसमेंट, कैसा? फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल। एक्सपोजर, वर्ड देखिए आप, हैरेसमेंट, एक्सपोजर, issues of inclusion, big words are there, and then you can explain it. Trafficking, as I just said, prostitution, sex workers are trafficked as sex slaves internationally, more than 60%. Lack of sensitization by public और पुलिस। अब इसके लिए क्या है? उज्ज्वला स्कीम है डेस्टिट्यूट वर्कर्स के लिए, एजुकेशन जैसा हमने बात की उनके बच्चों के लिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस लाइक एम्स्टर्डम, रजिस्ट्रेशन बेस्ड सेक्स होटल्स है वहां पर, तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन तो हो ही सकता है। जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस फॉर पब्लिक, so sex workers have all the right to live with dignity and inclusive public and police can achieve the same consensus की सिर्फ बात करके, two adults in a consensus way, it cannot be a profession नहीं हो सकता उस तरीके से, ये भी नहीं कहा है ना जजमेंट ने, तो आप अच्छा पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको कैसे सिस्टमेटिक अप्रोच से रखना है, हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे बड़ा बड़ा वर्ड लेके एक बार हम भी कर सकते हैं। गोइंग बैक टू द डालसा डीएलएसएस, आर्टिकल 39 है, हमने भी लिखा, वनरेबल एंड नीडी बिल्कुल हमने लिखा, ब्रिज इंस्टीट्यूशनल गैप, वो जो मैंने बात बोली, जैसे कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव कहता है कि इंडिया जो है सिर्फ 20 तो ये क्या बोलते हैं आपका 0.075 पर कैपिटल लीगल अवेयरनेस के लिए करता है। मैंने बोला था आपको कि भाई कुछ हम क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाएं, हम अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएं। लास्ट माइल डिलीवरी, न्याय बंधु स्कीम, ईज डाउन द बर्डन ऑफ जुडिशरी, 4 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं, आपने भी बताया, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात। बी एन श्री कृष्णा कमेटी की बात हमने नहीं की। कोलैबोरेशन सिविल सोसाइटी हमने इस तरीके से नहीं लिखा कि लीगल एजुकेशन बढ़ाएं या फिर हम अवेयरनेस को बढ़ाएं, इस तरीके से नहीं लिखा। एम्पावर द वनरेबल सेक्शंस, वुमेन, दलित, ट्राइबल्स, क्लाइमेट रिफ्यूजीज, हमने वर्ड यूज नहीं किया, विक्टिम ऑफ डिजास्टर विद कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस डिस्पर्सल। So issues of infrastructure, I already said, women representation, awareness, so that's how it is. कॉलेजियम सिस्टम, थर्ड जजेस केस नहीं बताया, फर्स्ट सेकंड की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं डिमांड कर रहा है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट विद द चीफ जस्टिस विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, दैट इज व्हाट अगेन इट इज एलिज्ड। सो इश्यूज क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नो पब्लिशिंग ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, हाँ ये पॉइंट अच्छा है, नो पब्लिशिंग ऑफ डिबेट एंड, हुआ कैसे, अराइव कैसे किया, जजेस अपॉइंटिंग जजेस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अगेन इट इज अ डिबेटेबल पॉइंट। अंकल किथ सिंड्रोम अबाउट नेपोटिज्म, हाँ ऐसा बोला जाता है कि भाई हर कोई नहीं घुस पाता, तो ये सिंड्रोम है। जुडिशियल अकाउंट्स एंड अकाउंटेबल, आपने भी एनजीएससी का लिखा, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नो स्पेशलाइज्ड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जूरिस्ट एवर बीन सीजेआई, सो आर्टिकल 124 says no specialized and extraordinary jurist in lines with the national judicial appointment commission, ये हमने बात बोली। रिफॉर्म्स बोला, पब्लिशिंग द कॉलेजियम डिबेट, वो उसी का उल्टा लिख दिया। लॉ मिनिस्ट्री का इनपुट नहीं लेना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी इन द रूल रिगार्डिंग ट्रांसफर, हाँ है ऑलरेडी, वो भी है, तो वो मतलब कि उसको बस एक इंटीग्रिटी के साथ रखें, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे है। तो सेपरेट बॉडी फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट आप कैसे ले लेंगे, जापान थोड़ी ना है हमारा इंडिया, तो ये नहीं हो सकता पॉइंट। तो पीआरएल लिमिटेड वर्सेस महानदी कोलफील्ड्स यूनाइटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला एग्जीक्यूटिव मस्ट पास द प्रपोजल ऑफ कोलिजियम इन ए रीजनेबल टाइम, बट जुडिशरी मस्ट बी मोर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, तो है वो, लेकिन मोर उसके अंदर पीपल का फेथ वाली बात है जो हमने पहले बात की थी। तो ये पॉइंट्स है, लेकिन सारे पॉइंट आर नॉट एग्रीएबल। थर्ड पिलर है, बात ठीक है, और लेजिटिमेसी ट्रांसपेरेंसी हमने ही बात की, सारे पॉइंट्स आप नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, एक दो पॉइंट्स आ सकता है, एलेज करके आप लिख सकते हो, एलेज है ऐसा। स्टील फ्रेम है, आपने भी लिखा, आइवरी टावर, रिक्रूटमेंट और स्टैंडर्ड ट्रेनिंग के अलावा क्या चाहिए, बासवान कमेटी ने बोला, लेटरल एंट्री आपने ही बोला पर कमेटी का नाम नहीं बताया, डोमेन एक्सपर्ट की बात नहीं की, सेकंड एआरसी ने बोला कि भाई 14 और 20 साल के बाद 360 डिग्री रिव्यू होना चाहिए, आपने एग्जैक्ट नहीं बोला, होता कमेटी ने क्या बोला ये हमने लिखा, हमने नाम लिख दिया सिर्फ। स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स फॉर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे होना चाहिए, सुरेंद्रनाथ कमेटी के ने बोला कैडर पॉलिसी का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या बोला, एनआरआई या मतलब जो है उनको भी आप किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो हर पॉइंट अपने आप में किस कमेटी है, होता कमेटी, श्री कृष्णा कमेटी या वट एवर इट इज, सो एवरी पॉइंट इज इट सेल्फ इज एन इलस्ट्रेशन। रिफॉर्म्स इन आर्टिकल 311 फॉर इम्यूनिटी मस्ट बी स्ट्रीमलाइन, नेशनल कमीशन ऑन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, some journalists must be specialized, some specialized must be generalized.
सो मोदी जी कॉल्स कर्मयोगी, जो हमने ऊपर लिखा, तो इन्होंने पूरा समझा कि कर्मयोगी दिया। इट मस्ट नॉट बी रूल बेस्ड, बट रूल बेस्ड आपने भी ये पॉइंट बताया। So that's how it is. So certain developments can be taken place. Rest you can share. सर आई वुड से राइटिंग विद मोर सेंसिटिविटी, कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं जैसे उसको थोड़ा राइटली पुट अप करना, वर्ड्स जो यूज किए जा रहे हैं, दैट इज वन थिंग। और थोड़े हेवी वर्ड्स जैसे आप बोल रहे हैं, जिससे थोड़ा और इम्पैक्ट और फील है। Mhm. और जैसे जो माइक्रो डिटेल जैसे कमिटीज एंड डेटा वो इम्प्रूव Data कर। will be taken up. Yes, yes. So I think on track, and answers are becoming more vibrant and they are on track. But then little bit of more overhauling is required, which I believe will be coming up soon with practice, consistency, and more passion in the answers. Thank you very much.